हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अपनी 9th की न्यू एनसीईआरटी कावेरी का चैप्टर नंबर 4 विटामिन एम के क्वेश्चन आंसर्स। सो आज का जो ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़ी से ज़्यादा हैं। मतलब आज वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, वो भी थोड़े से लेंदी हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि वन वर्ड पूछा हुआ है, प्रॉपर उन्होंने आंसर्स पूछे हुए हैं। सो आज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना और अपनी कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर आपको क्या लिखना है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला जो आपका चेक योर अंडरस्टैंडिंग है उसके क्वेश्चन आंसर से हम लोग शुरू करेंगे। जो फर्स्ट पेज पे आपको दे रखा है दैट इज नॉट ऑफ मच यूज, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो बताऊंगी, जो आप खुद कर सकते हो वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, जैसा आपका मन करे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं। सी, अब यहाँ पे आपके चेक योर अंडरस्टैंडिंग में 4 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो मैं इन 4 के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता देती हूँ। ये देखो, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा, चेक योर अंडरस्टैंडिंग पेज 102, ठीक है। इसमें आपको बता रखा है मैंने चैप्टर का। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर? So answer is, grandpa felt uncomfortable in the city because he was treated more like a dependent child than an elder. He disliked being constantly monitored and restricted, which made him feel that his dignity and independence were being taken away. The city life also lacked the freedom and respect he was used to in the village. So second question है आपका, why did Vidya not want her father to go out alone? So the answer is, Vidya was worried about her father's safety. She feared that, being old, he might get lost, confused, or face difficulties in the busy city environment. Her concern came from love and care, but it also reflected her tendency to overprotect him, which Grandpa found stifling. Question number 3 is, was Ravi in favor of his mother treating Grandpa like a child? How can you say so? So the answer is no. Ravi was not in favor. He believed, one second, he believed that treating Grandpa like a child was disrespectful and unfair. Ravi understood that Grandpa valued his independence and dignity, and he often defended him against his mother's overprotective behavior. This shows Ravi's empathy and maturity in recognizing the importance of respecting elders. Then fourth question is, would Ravi be able to keep his promise to his mother? So the answer is, Ravi promised his mother that he would take care of Grandpa responsibly. Given his sensitivity and respect for Grandpa's feeling, it is likely that Ravi would keep his promise. He had already shown understanding of Grandpa's need for dignity, so his sense of responsibility suggests he would balance both his mother's concerns and Grandpa's independence. So ये है आंसर्स आपके चेक योर अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर 102 की जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग है उसके आंसर्स हैं आपके। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली चेक योर अंडरस्टैंडिंग की तरफ, जो है आपकी पेज नंबर 109 पर। सो 102 के हमने कर लिए हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स पेज 109, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे चैनल पे जाना। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेसिफिकली क्लास 9th के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चैप्टर पढ़ सकते हो और ये वीडियो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी कभी दोबारा से कुछ देखना चाहो तो आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। सी, चेक योर अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें पहले ये एक फ्लो चार्ट है, ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि ये फ्लो चार्ट आपको स्टोरी बतानी है, ठीक है। और स्टोरी आप खुद बताना ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है। हम बात करेंगे यहाँ से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 109 की है ये। सी, क्वेश्चन इज दिस वन, was grandpa lost as feared by Ravi's mother? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। Then let's start. So this is the answer. No,
Grandpa was not lost. He knew exactly where he was going and moved confidently from one place to another. His mother's fear was unnecessary. Grandpa was independent and capable of managing himself. Third question is, how would Ravi feel after seeing Grandpa? So the answer is, Ravi would feel relieved and proud. He realized that Grandpa was not helpless but rather active, alert, and resourceful. This gave Ravi a new respect for his grandfather's independence. Next question is, I think we have just 2, 3, and 4 now. The fourth question is, do you think Ravi's mother will get to know about what had happened? So the answer is, it is unlikely that Ravi's mother would know the full details because Ravi might not tell her everything. He understood that her overprotective attitude came from worry and he may choose to keep Grandpa's successful outing a secret to avoid conflict. So ये हैं आपके ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट के साइड. पार्ट 1 का हो गया हमारा, पार्ट 2 का हो गया. अब चलते हैं हम अपने पार्ट 3 की तरफ, जहां पर रवि को एक बुक मिली थी डिटेक्टिव वाली उसके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू. उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक डिटेक्टिव नॉवल दिया था. ओके, सो दिस वन. अब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैं तीनों के आंसर्स आपको बता देती हूँ. ये रहे आपके तीनों के आंसर्स. First one is, describe how Ravi's emotional reaction upon finding Grandpa safe at home reveals his feelings towards his grandfather. So answer is, Ravi felt a deep sense of relief and joy when he saw Grandpa safe. His earlier worry showed how much he cared, but his happiness revealed respect and admiration for Grandpa's independence. This emotional shift highlights Ravi's affection and his recognition that Grandpa was capable of managing himself, not the helpless figure his mother feared. Second question is, what might be the significance of Grandpa's habit of giving gifts to everyone on his birthday rather than receiving them? Grandpa's practice of giving gifts instead of receiving them reflects his generosity and selflessness. It shows that he valued spreading happiness more than being the center of attention. This habit also symbolizes his dignity. He wanted to contribute positively to others' lives, reinforcing the idea that elders can give joy and freedom rather than only receiving care. And third question is, why do you think Grandpa gave Ravi a detective story book as a gift? What might this suggest about Grandpa's awareness of Ravi's actions earlier in the day? So the answer is, Grandpa's choice of a detective story for Ravi was not accidental. It suggests that he was aware of Ravi's secret detective work earlier in the day, when Ravi followed him around to ensure he was safe. By gifting this book, Grandpa acknowledged Ravi's concern with humor and affection. It was his way of showing that he noticed Ravi's action, appreciated his care, and encouraged his curiosity in a playful, dignified manner. सो ये थे आपके चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपके इन बिटवीन द चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स. अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ. सो मेन एक्सरसाइज है हमारी यहाँ से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट. आप एक्सट्रैक्ट अपने आप पढ़ोगे. आई जस्ट प्रोवाइड यू द आंसर्स. First question is, choose the emotion displayed by the grandfather. So the answer is nostalgic. Second is, complete the following sentence with a reason. Grandpa hated the busy and noisy city life because answer है, it lacked the peace, quiet and natural beauty of his village home. Third question is, why did Grandpa come to city despite his dislike for city life? So the answer is over here. Grandpa had slipped and fallen in his garden one evening and lay outside all night because no one was there to help him. After this incident, his daughter insisted he move to the city so that he would not be all alone and would have family support nearby. Now, fourth question is, choose an expression similar in meaning to you can even hear a leaf fall. Answer is option number D, that is pin drop silence. Question number 5 is, state one advantage and one disadvantage of the grandfather living in the house in town.
So answer is over here. Advantages: Grandpa enjoyed peace, solitude, and closeness to nature. The quiet environment gave him comfort and dignity, unlike the noisy city. And the disadvantages: he was alone, and when he slept in the garden, there was no one to help him. This lack of immediate support made living there unsafe for an elderly person. Now, this one we have a second extract. Again, extract you are going to read by yourself. We have question number 1. Choose the option that displays the tone of grandfather's response. So answer is option number C, calm. Second is, why was Ravi confused and embarrassed? Answer is, Ravi was confused and embarrassed because Grandpa coolly mentioned that Ravi had disappeared instead of staying home to look after him, as his mother had instructed. Ravi realized that Grandpa had noticed his absence and indirectly exposed his secret attempt to follow him, which left him feeling awkward. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल रीजन. फर्स्ट, Ravi's mother was impatient because. Answer is, she thought grandpa had forgotten that Ravi's birthday was 3 months ago. Fourth is, state whether the following sentence is true or false. Grandfather forgot that Ravi's birthday was 3 months ago. So this statement is false. Question number 5 is, why did Grandpa say he didn't know what kind of morning Ravi might have had? So the answer is over here. Grandpa said that this because while his own morning was quiet and pleasant, Ravi had spent it anxiously following him around in secret. Grandpa was subtly pointing out that Ravi's experience was very different, full of worry and effort compared to his calm outing. So this is the two extract based question answers. Now coming towards our main answer the following questions. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारे हैं 7 8 ओके 8 क्वेश्चंस. अब इन 8 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. ओके, वी हैव हियर. Answer the following questions, page 111. First question is, Grandpa is portrayed as a person with failing memory in the beginning of the story. Give two evidences to disapprove this statement. So the answer is, Grandpa is not forgetful as suggested initially. He confidently went out alone, stopping at the barber shop, fruit stall, tea stall, and temple without losing his way, which shows his memory was intact. Moreover, he cleverly noticed Ravi secretly following him and later gifted him a detective story book, proving his sharp awareness and presence of mind. Second question is, give two characteristic traits of each of the following characters. So we have three characters और तीनों characters के आपको दो traits बताने हैं. First character is grandfather. So he is independent as he dislikes being treated like a child and manage his outing confidently. And second है, he is also wise and humorous, shown when he acknowledges Ravi's action with a playful gift. Second character है Ravi. He is caring, demonstrated by his concerns for grandpa's safety. He is also curious and detective-like as he secretly follows grandpa to observe his movement. Third character है आपका Ravi's mother. She is overprotective, constantly worrying about grandpa's safety. She is also impatient as seen when she assumes grandpa has forgotten Ravi's birthday upon seeing the gift parcel. Third question is, why was Ravi worried about what grandfather had at the tea stall? So the answer is, Ravi was worried because he feared grandpa might eat or drink something unhealthy or unsuitable for his age. His concern reflected his protective nature and his desire to ensure grandpa's well-being. Fourth question is, do you think it was easy for Ravi to follow his grandfather? If yes, why? If no, why not? So the answer is no. It was not easy for Ravi to follow his grandfather. Grandpa moved quickly and confidently, stopping at different places while Ravi had to hide behind trees and bushes to avoid being noticed. This made it difficult for Ravi to keep track of him without being discovered. Question number 5 is, Ravi is a good detective. Give one argument in favor of and against the given statement. So the answer is,
In favor, Ravi followed Grandpa carefully, hiding and observing without being seen most of the time, which shows detective-like skills. Against her, Grandpa was aware of Ravi's presence and even fooled him at the bus stop, proving Ravi was not as skilled as he thought. Now, question number 6 is, was grandfather aware that Ravi was following him? How do you know? Answer is yes, grandfather was aware that Ravi was following him. This is evident when he later gifted Ravi a detective storybook, which was a playful hint that he had noticed Ravi's secret detective work all along. Now, question number 7 is, in your opinion, who needs vitamin M and why? So the answer is vitamin F refers to one second. So it is vitamin M refers to memory, and mother needs vitamin M more than grandfather as she has forgotten that it was his birthday and was busy complaining about her father forgetfulness. Question number 8 is, some people believe society shows bias based on age, being young or old. Give an example where you might have experienced or observed such discrimination where opinions were disregarded because of age. So the answer is, an example of age-based bias is when children's opinions about household decisions are disregarded because they are considered too young to understand. Similarly, elders' suggestions are sometimes ignored and outdated, even though both groups may have valuable perspectives. This shows how society often undervalues opinions based on age rather than merit. सो ये थे आपके 8 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, जैसा आपका मन करे आप लिख लीजिए. अब चलते हैं हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ. यहाँ मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं. अब आता है हमारा वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर. So this is the first question. First question says, classify the words given in the box on the next page into movement words in column 1 and sound words in column 2. तो हमें जो ये टेबल गिवन है इसमें से हमें मूवमेंट वर्ड्स निकालने हैं और साउंड वर्ड्स निकालने हैं. सो ये कॉलम 1 में है मूवमेंट वर्ड्स. ठीक है, तो जो है पॉटरिंग, बसल, डक्ट, एविक्टेड, जंपिंग, क्रॉल, ब्रिस्कली, स्प्रिंटिंग, डार्टेड, twirling, creeping, zigzagging and sprinting. और कॉलम 2 में है साउंड वर्ड्स जैसे boomed, shrieks, thudded, whirred, grunted and snoring. ठीक. Now fill in the blanks with appropriate words from column 1 और 2. अब आपको ये जो पैराग्राफ गिवन है इसमें आपको ब्लैंक्स फिल अप करने हैं. मैं केवल आंसर बता रही हूँ, पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी. फर्स्ट वाले में आएगा ट्रेलिंग, सेकंड में आएगा बसल, थर्ड में आएगा ब्रिस्कली, फोर्थ में थर्डेड, फिफ्थ में ट्वर्लिंग, सिक्स में क्रॉल, सेवन में जिगजैगिंग एंड एट्थ में आएगा आपका ग्रंटेड. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, अभी स्टिल वी हैव नाइन्थ में आएगा स्प्रिंटेड एंड टेंथ में आएगा आपका स्नोरिंग. नाउ सेकंड इज study the highlighted word in the given sentence from the text and fill in the boxes with synonym words. You may refer the dictionary. Off he went twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in dilemma. So अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपके पास यहाँ पे words given है. You have 6 words. आपको उनके मीनिंग बताने हैं, उनकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, सिनोनिम बताना है, एंटोनियम बताना है. तो फर्स्ट है क्राफ्टली. मैंने मीनिंग इस साइड लिखा हुआ है क्योंकि टेबल थोड़ी सी छोटी थी. क्राफ्टली का मीनिंग होता है डन इन अ क्लेवर वे. पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, सिनोनियम है कनिंगली और इसका एंटोनियम है ऑनेस्टी. सेकेंड वर्ड इज डिलेमा. इट्स मीनिंग इज अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ डिफिकल्ट चॉइस. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, सिनोनियम क्वांट्री एंड एंटोनियम इज सॉल्यूशन. थर्ड वर्ड इज फ्यूरियस, मीनिंग एक्सट्रीमली एंग्री. पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, सिनोनियम enraged, एंटोनियम calm. Fourth is boomed, meaning made a loud sound. Part of speech is verb, synonym roared, antonium whispered. Fifth word is humiliation. Its meaning is feeling of shame. Part of speech noun, synonym embarrassment and antonium is pride. And last word is attire. Meaning is clothing. Part of speech noun, synonym dress and antonium is undress. Now match the emotions or expressions in column 1 with their meanings in column 2.
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम 1 में इमोशंस है, उसके मीनिंग्स है कॉलम 2 में। अगेन मैंने देखो यहाँ पर ही ये रेड में जो है ये आंसर्स है, ठीक है। फर्स्ट का है एम्बैरेस्ड का है 5th यानी फेल्ट अनकंफर्टेबल। सेकंड काउंटर्ड का है 4th रिप्लाई टू एन आर्ग्यूमेंट। फ्लश्ड का है 6 बिकेम रेड इन फेस। फोर्थ का है स्ट्रिकन का है फर्स्ट अफेक्टेड सिवियरली बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग। और फिफ्थ ग्लीम का है थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। सो आंसर्स यहाँ पे गिवन है, आप आंसर्स को नोट डाउन करते चलो क्योंकि स्टोरी ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब देखो, फर्स्ट वाला ब्लैंक में प्रपोजिशन आएगा थ्रू, सेकंड में आएगा ओवर, थर्ड में आएगा नियर, फोर्थ में आएगा इन, फिफ्थ में आएगा अलोंग और सिक्स्थ में आएगा इनटू। आप आंसर्स देख लीजिए, आंसर्स आप लिख लीजिए। देन चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स। अब इसमें आपको ना ये बताना है कि कौन से टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट वाले में है द वर्ड्स इन द कोट्स आर डैश सेंटेंसेस, तो इसका आंसर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बी है सेंटेंस 1, 4 एंड 5 आर डैश इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो येस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सी है आपका सेंटेंस 2 एंड 3 आर डैश, तो वो 2 एंड 3 है WH टाइप। सो देयर आर डैश, टू टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक WH टाइप होता है और एक येस और नो टाइप होता है। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा ये पूरा का पूरा टेबल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कैसे कन्वर्जन करते हो। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको केवल इसकी जो एक्सरसाइजेस के आंसर बता देती हूँ। अब ये क्या है, ये डायलॉग्स है। नाउ हमें ये कंप्लीट करना है रिपोर्टेड स्पीच। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अरविंद आस्क्ड प्रिया इफ शी, फर्स्ट में आएगा हेल्प्ड इन टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, ठीक है। फॉर विच प्रिया रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट। सेकेंड ब्लैंक में आएगा टुक टर्न्स मेकिंग श्योर दे वर ऑल राइट। Priya further asked Arvind. थर्ड वाले में आएगा if he had grandparents living with him. Arvind replied in the negative and said. Fourth one is he and his parents visited his grandparents every weekend. Then he further inquired how Priya managed her grandparents' medical need. Then Priya responded by saying that they had a schedule for giving medications and visits to the doctor. So this one is your direct indirect. और हमारा वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है, 22 अराउंड 23 मिनट्स का हो गया है, बट लेकिन यहाँ पर हमारा विटामिन एम चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेस, चाहे वो आपकी इन बिटवीन हो, चाहे बैक एक्सरसाइजेज हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, जो आपकी बुक्स में गिवन है वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई हैं, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर एक्सरसाइजेज और सारा राइटिंग टास्क क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर ये वीडियोज हो जाती हैं। आपको जो बेसिक नीड्स है, आपको आंसर्स की ज़रूरत है, वो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और आई फील कि आपको शायद आंसर्स अच्छे लग रहे होंगे। मेरी जो थोड़ी सी जो मैं मेहनत करती हूँ, आपको वो मेहनत अच्छी लग रही होगी, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं कल दोबारा से, अगली नेक्स्ट पोयम है शायद हमारी, पोयम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, पोयम की बैक एक्सरसाइज के साथ। और टिल देन एंजॉय करो वीडियोस को, आंसर्स लिखो। अभी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अपना इसी वीडियो से ही पढ़ लो, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद समवन जिसका तुम थोड़ा सा ख्याल रखते हो कि वो भी थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर टीचर्स, अपने टीचर्स को बताओ, अपने स्कूल्स में बताओ, ताकि उनको भी मेरी वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट हो। मिलते हैं कल आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर आपको पोएम पढ़नी है, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें सब चीज़ मिल जाएगी। मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।